Guys, this the previous recording that I made was about the format of the income statement, and there are two major financial statements in the O level accounting course. One is the income statement, and the other is the statement of financial position. So this video is actually to explain the format of the statement of financial position. However, firstly, what I need to tell you guys is that statement of financial position is based on this simple accounting equation that we do in grade 9. So the assets is equal to capital plus liabilities. So what the students need to know is that the first part of the statement of financial position is the total assets. The second part is the sum of capital and liabilities. ठीक है. सो एसेट्स जो हैं वो दो टाइप के होंगे. एक तो होंगे नॉन करंट और एक होंगे करंट. सो like all of you know already that assets are those resources that benefit the business. So we divide them into two मेजर. सो एक तो नॉन करंट होते हैं. नॉन करंट होते हैं जो आपको ज़्यादा टाइम के लिए बेनिफिट देते हैं फॉर मोर देन 1 ईयर. फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग्स, या फिर मोटर व्हीकल्स, या फिर कंप्यूटर इक्विपमेंट, या फिर ऑफिस फर्नीचर, या फिर फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स. So all these kind of assets will actually benefit you for more than 1 year. However, there will be current assets which change on a daily basis. Like for example, inventory. सही, इन्वेंट्री रोज़ आप जो है कुछ इन्वेंट्री ख़रीदते हैं, कुछ बेचते हैं, तो उस पर रोज़ चेंजेस आ रहे होते हैं. द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री चेंजेस एवरी डे. सो an inventory, what you do is that you keep on selling inventory, purchasing new inventory. Similarly, बैंक में जो पैसे होते हैं वो आपके जो हैं वो डेली बेसिस पे चेंज हो रहे होते हैं. आप कुछ ख़रीद रहे होते हैं, कुछ बेच रहे होते हैं. सो नॉन करंट एसेट्स जो होते हैं वो इट्स लाइक अ वन टाइम परचेज एंड देन यू यूज़ इट फॉर अराउंड 4-5 years. Similarly, liabilities will also be classified into two types. There will be non-current and there will be current. So हमारी जो नॉन करंट लाइबिलिटी होती है, लाइक फॉर एग्जांपल बैंक लोन. तो आपने अगर एक बैंक लोन लिया है, सो दैट्स अ नॉन करंट लाइबिलिटी. यू नीड टू रीपे इट आफ्टर 4-5 years. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द लोन इज़ लाइक. सही है, लेकिन इसको आपको यूजुअली रीपे करना होता है आफ्टर 1 year. Current liabilities you need to repay within 1 year. So this is very important to note कि the first section of the statement of financial position will be this total assets होंगे, और दूसरा जो इसके बाद वाला जो सेक्शन होता है उसमें कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ होती हैं. तो द बैलेंसिंग वैल्यू इज़ एक्चुअली द टोटल एसेट्स एंड द सम ऑफ capital plus liability, the capital and liabilities. So if you see here, this format is, it's just like the format that I made for income statement. लेकिन यहाँ पे जो मैंने statement of financial position में आपको जो question मिलता है financial statements of sole trader, so they give you a trial balance, they give you adjustments. तो उसमें आप जो है the first part says make the income statement, the second part says make the statement of financial position. तो आपने एक बार income statement बना लिया, so you need to make the income statement first. Sometimes the student might ask कि हम जो है वो statement of financial position क्यों नहीं बना सकते पहले, because we need to calculate profit for the year. So statement of financial position, firstly, or everyone should know, it's also part of the chapter 1, tells the worth of the business, कि हमारा business जो है वो actually में कितने का है at that particular date. मतलब हम कितने एसेट्स ओन करते हैं एट दैट पर्टिकुलर डेट. सो ऑब्वियसली व्हेन वी आर ट्रेडिंग एंड व्हेन वी आर डूइंग बिजनेस, तो हर साल हमारे एसेट्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए. आइडियल केस में हमारे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ होनी चाहिए ओवर टाइम, एंड ऑब्वियसली द वर्थ ऑफ द बिजनेस शुड ग्रो ओवर टाइम. सो if you see the statement of financial position, you need to know the profit for the year first from the income statement to actually make the statement of financial position. So if you see here, this particular ये जो headings हैं
these are only relevant to the non-current assets, because non-current assets में cost होती है, non-current assets में depreciation होती है, non-current assets में net book value होती है. Current assets के लिए ये headings जो हैं वो relevant नहीं है. This is only for the non-current assets. So if you see the non-current assets जो भी आपके पास है, so you take the cost of the non-current asset from the trial balance, and then you have this depreciation that you need to calculate. For accumulated depreciation, you should always know the meaning of the word accumulated. Accumulate means to gather. और जिस दिन से आपने नॉन करंट एसेट ख़रीदा है, उस दिन से आपने कितनी डिप्रिसिएशन चार्ज की है ऑन द नॉन करंट एसेट इज़ योर accumulated depreciation. सो प्रॉब्ली जिस साल के लिए आपने इनकम स्टेटमेंट बनाया, आपने उसमें भी डिप्रिसिएशन चार्ज की है, और पास्ट years की भी depreciation है. So there will be a depreciation in the trial balance, that is provision for depreciation, plus you add that depreciation जो आपने current year में charge की है, then you will get the accumulated depreciation on that particular non-current asset. So if you see land and buildings की cost, you will get them from the trial balance. Accumulated depreciation, you take the provision for depreciation from the trial balance, and you add the latest depreciation that you have charged in the current year. So provision for depreciation and accumulated depreciation, sometimes the students there are so many terminologies that the students should know. So it's very simple. The provision for depreciation account actually contains the accumulated depreciation. वो actually depreciation का account होता है, और उसी में सारी depreciation accumulate हो रही होती है. The balance brought down in the provision for depreciation account is the accumulated depreciation at the start of the year. Then you charge more depreciation, then the balance carried down is the accumulated depreciation at the end of the year. So depreciation is being accumulated in the in the provision for depreciation account. We call it provision for depreciation. So accumulated depreciation किस तरह निकालनी है मैंने आपको बता दिया. तो you do cost minus accumulated depreciation to get the net book value. ठीक है. The net book value is like an estimate of your own estimate, like the estimate of the business, कि business का estimated value of the non-current asset क्या है. ठीक है. So obviously the non-current asset will lose its value over time, तो इसलिए हमें उसको depreciate करना पड़ता है, and हमें उसको एक net book value पे value करना होता है, which is the fair value of the non-current asset. Net book value is close to the market value. Market value is what you can fetch when you go to the market to sell your non-current asset. लेकिन हम जो वो हमेशा नेट बुक वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू विल बी क्लोज, बट नेट बुक वैल्यू विल नॉट बी सेम एज मार्केट वैल्यू, क्योंकि मार्केट वैल्यू जो है वो हर वक्त चेंज होती रहती है. तो हम बिकॉज इन अकाउंटिंग वी आर नॉट इंटेंडिंग टू sell the business. There is a concept, it's called going concern. In accounting we are assuming that we'll continue in the business for the foreseeable future, इसलिए हम उसको net book value पे value करते हैं हमारे non current assets को. That's part of depreciation as well. So वहाँ पे भी आपको ये काम आएगा ये concept. But if you see here, this is not inclusive of every non current asset that you may have. So I have tried to put all those जो CIE में usually होते हैं. ऑफिस फर्नीचर हो सकता है, एक एक्स्ट्रा फर्नीचर हो सकता है, तो वो हम ऐड करेंगे. ऑब्वियसली हमें पता है कि फर्नीचर जो है इट लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सो वी नो इट्स अ नॉन करंट एसेट. तो that's about it. So we add all the net book values, so we get a value of total non current assets. Then we have current assets. अच्छा, इधर मेरे स्टूडेंट्स मुझे हमेशा पूछते हैं दैट मिस आप जो हैं वो क्लोजिंग इन्वेंट्री को सेकंड कॉलम में क्यों लिखती हैं, और आप ट्रेड रिसीवेबल्स को जो है वो वाई डू यू राइट इट इन द फर्स्ट कॉलम, एंड देन यू राइट द अदर नॉन करंट एसेट द अदर करंट एसेट्स इन द सेकंड कॉलम. So the point to note here is the way of presenting what you're actually, मतलब आपका पूरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की प्रेजेंटेशन इज़ द पॉइंट. तो इन्वेंट्री, बिकॉज आई डोंट नीड टू एडजस्ट द इन्वेंट्री फॉर एनीथिंग. मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में से इन्वेंट्री की वैल्यू पिक की और डायरेक्टली यहाँ पे लिख दी. लेकिन मुझे ट्रेड रिसीवेबल को आई नीड टू एडजस्ट इट फॉर प्रोविजन, एंड आई नीड टू शो टू द एग्जामिनर कि मुझे पता है अच्छा कि प्रोविज़न कितना था, और वो जो मुझे माइनस करके एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करके लिखना है. तो इसलिए मैं इसको यहाँ एडजस्ट करती हूँ और सेकंड कॉलम में इसके दोनों को सब्ट्रैक्ट करके सेकंड कॉलम में लिखती हूँ. एंड अदर रिसीवेबल्स, सो यू कैन राइट प्रीपेड एक्सपेंस एज वेल. मतलब अदर रिसीवेबल्स आर ऑफ टू टाइप्स, देयर इज प्रीपेड एक्सपेंस एंड देयर इज एन ओइंग इनकम. सो
बोथ ऑफ देम यू कैन ऑल्सो राइट इट इन दिस वे कि प्रीपेड जो भी प्रीपेड एडवर्टाइजिंग या प्रीपेड इंश्योरेंस है या फिर प्रीपेड रेंट है, इसको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू. लेकिन एग्जाम में इफ़ यू सी द मार्किंग स्कीम्स से अदर रिसीवेबल्स देव रिटन इट इन दिस वे, सो यू ऐड बोथ ऑफ देम, वो भी ठीक है. ठीक है. तो आपने यहाँ पे ये लिख दिया एंड देन यू हैव बैंक. सो मैंने बैंक को ब्लू इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि बैंक नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है, मैंने इसको इसलिए बैंक को ब्लू में लिखा है. लेकिन बैंक अगर नेगेटिव होगा तो उसके लिए आई विल टेल यू व्हाट हैपेंस व्हेन इफ़ इट्स अ नेगेटिव बैलेंस इन द बैंक अकाउंट. बट इफ़ इट्स अ पॉजिटिव बैलेंस ऑब्वियसली इट्स अ करंट एसेट, आपके पास वो पैसे हैं. ठीक है. द मनी इन योर बैंक अकाउंट इज़ ऑल्सो योर रिसोर्स. it's a very important resource. And then you have cash. So cash is the amount of money that you have in your office drawer, for example, या cash in hand, for example. ठीक है, उसको cash कहेंगे. And then if you see, you'll get the total current assets here. So this is just like the way of presenting. तो ये मैंने सारे ये जो हैं यहाँ पे ऐड करके यहाँ इसका टोटल लिख दिया है. तो अब मैं ये और ये दोनों ऐड करूँगी, नॉन करंट एंड करंट will give me the total assets here. So this becomes the balancing figure of the statement of financial position. So if you see, that's the first part, the first section of the statement of financial position. And if you see, आगे आपको जो है जो नेक्स्ट सेक्शन में है कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, कि शुरू में हमारे पास कितना कैपिटल था. सो कैपिटल विल एक्चुअली change every year depending on the profits and losses that the business makes. So capital at start, so we add profit for the year here. So whatever profit that we have made out of the business को चला के हमने जितना भी profit बनाया है वो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे. तो हमारे पास शुरू में जो कैपिटल था, that's the opening capital, and profit will always increase capital. ठीक है, क्योंकि profit will be reinvested into the business for actually बिज़नेस को बढ़ाने के लिए. ठीक है. तो आपने यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड कर दिया, तो आपका जो है वो एक अमाउंट आ गई, कितना से इंक्रीज़ हुआ है. ड्राइंग को आप माइनस क्यों करते हैं? यू हैव टू टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स यूजुअली. हर क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है आपके पास गुड ड्राइंग्स हो, लेकिन हर क्वेश्चन में कैश ड्राइंग्स तो होती हैं. सो यू ऐड बोथ ऑफ देम एंड देन यू सबट्रैक्ट देम फ्रॉम दिस वैल्यू, सो यू गेट क्लोजिंग कैपिटल ओवर हियर. ड्राइंग्स विल ऑलवेज रिड्यूस कैपिटल. ड्राइंग्स इज ऑपोजिट ऑफ कैपिटल. कैपिटल में आप ओनर जो है वो बिज़नेस के अंदर पैसे डाल रहा होता है. ड्राइंग्स में वो गुड्स या कैश जो है वो बिज़नेस से निकालता है. सो दैट रिड्यूसेस देयर अमाउंट इन कैपिटल. So the last part of the statement of financial position is the non-current liabilities and the current liabilities. So you need to remember the headings. So इसको याद करने का तरीका ये है कि आप इसको सबसे पहले इस तरह याद करें कि अच्छा this is based on the accounting equation, assets is equal to capital plus liabilities. फिर आप उसको इस तरह याद करें, एसेट्स में हमारे पास दो टाइप हैं, नॉन करंट एंड करंट. ठीक है. फिर हमारे पास कैपिटल के लिए वी जस्ट हैव कैपिटल एट स्टार्ट, एट प्रॉफिट फॉर द ईयर माइनस ड्राइंग्स, यू गेट कैपिटल एट एंड. ठीक है. फिर आप जो है यहाँ पे यू हैव टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़, नॉन करंट एंड करंट. ठीक है. तो आपने यहाँ पे नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कैन बी अ बैंक लोन और इट कैन बी अ लोन फ्रॉम समवन, बट इट शुड बी अ लॉन्ग टर्म लोन. एक साल के बाद नहीं, मतलब एक साल एक लॉन्गर पीरियड के लिए हो, जैसे 5 years 4 years. Usually you need to repay it after 1 year. So bank loan, if they say bank loan is repayable in the next year, like in the coming year, so that becomes your current liability. It's not your non-current liability anymore. ठीक है. If it's repayable after 1 year, जैसे next year नहीं repay करना उसको, उसके आगे वाले साल में repay करना है, तो then it's your non-current liability. So if you see, then you have current liabilities. Current liabilities में हमारे पास you have trade payables that exactly comes from the trial balance. उसको exact copy paste करना होता है वहाँ से. फिर we have other payables, that is prepaid income. So income that is received in advance and we haven't given the service, तो हमें service देनी है इसमें, that's a liability. Owing expense, expense that we have used up but we haven't paid for it, तो हमें उसके लिए we need to write that too. And then bank overdraft. So I told you कि मैंने बैंक को जो है वो ब्लू में इसलिए लिखा है because bank can be either an asset, that is a current asset if it's a positive balance. If it's a negative balance, it's a bank overdraft. And bank overdraft is a short term loan. It's a facility given by the bank to some customers to overdraw their account. So that can, and then it's a short term loan, so they need to repay it
विद इन दैट ईयर, तो इसलिए उसको आप करंट लाइबिलिटीज़ में इंक्लूड करते हैं. एंड देन व्हाट यू डू इज़ दैट यू ऐड दिस क्लोजिंग कैपिटल, प्लस इसमें आप नॉन करंट लाइबिलिटीज़ ऐड करते हैं, प्लस इसमें आप करंट लाइबिलिटीज़ ऐड करते हैं, तो आपको ये जो है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ की वैल्यू मिल जाती है. एंड योर वैल्यू, टोटल एसेट्स की वैल्यू जो है वो कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ की से, मतलब द वैल्यू शुड बी सेम, so that you know it that what you've done is correct. लेकिन अगर वो सेम नहीं होती है, फॉर एग्जांपल, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. कभी कभी ये होता है कि अच्छा एक मिस्टेक हो गई उसके बाद और एक मिस्टेक हुई है और सेम नहीं आ रही वैल्यू, सो इट्स फाइन, डोंट वरी अबाउट इट. अगर एग्ज़ाम में आपकी वैल्यू सेम नहीं आती है इसकी, सो just try to actually take out the difference between the two values that is there, मतलब टोटल एसेट्स की और इन दोनों की डिफरेंस निकालें. एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि हो सकता है आपने कहीं कोई वैल्यू मिस कर दी हो डिफरेंस के अमाउंट की, या फिर आपने कहीं पे आपने कोई वैल्यू मिस कर दी हो फॉर एग्जांपल, तो इस वजह से भी हो सकता है आपका बैलेंस नहीं हो रहा हो. लेकिन द पॉइंट ऑफ द होल थिंग इज़ दैट यू नीड टू अप्लाई द अकाउंटिंग इक्वेशन करेक्टली, और एसेट्स को एसेट्स में लिखें, लाइबिलिटीज़ को लाइबिलिटीज़ में लिखें. अगर आप एसेट को लाइबिलिटी और लाइबिलिटी को एसेट कर देंगे तो फिर मसला है, वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल एरर्स आते हैं एंड वहाँ पे जो है वो मार्क्स ज़्यादा डिडक्ट होते हैं. सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.